हाय ऑल। सो आज के सेशन में हम एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं कि वेदर जो वोडाफोन और आइडिया के शेयर प्राइस में जो राइज आया है, क्या वो एक सस्टेनेबल राइज है? और क्या वो एक एक्चुअल टर्न अराउंड हो रहा है फर्म में या नहीं? और वो एक सस्टेनेबल अपॉर्च्युनिटी जनरेट करेगा या नहीं? तो इसको लेके मैंने एक्चुअली कुछ इन्फॉर्मेशन अपने ट्विटर हैंडल पे ऑलरेडी शेयर करी थी। सो आज हम उसी इन्फॉर्मेशन को वापस देखेंगे इन अ वीडियो फॉर्म सो दैट एवरीबॉडी इफ यू डिडंट फाइंड द टाइम टू रीड तो आप उसको देख सकें। तो मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन को जान सकें। सो हियर वी गो। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि शेयर प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। तो वोडाफोन का ये एक वीकली चार्ट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी वॉलेटिलिटी है, तो अप एंड डाउन्स बहुत सारे थे। सो रिसेंटली हम फोकस करें अगस्त में, जहाँ पे प्राइस वाज ऑन 6, नाउ द करंट प्राइस इज 12। सो विद इन अ 3 or 4 months we can see that Vodafone share price has jumped a lot. Now most people are asking why there is a jump happening and whether it's a sustainable और या फिर ये एक फ्लूक है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। तो इस चीज़ को लेके मैंने कुछ इनके ट्रांसक्रिप्ट्स कॉन्फ्रेंस कॉल के पढ़े, प्रेजेंटेशंस देखी और उससे एक एनालिसिस तैयार किया। सो माय ओपिनियन इज कि ये एक बेसिकली हीरो और ज़ीरो ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है रादर देन एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे हम कन्विक्शन के साथ कुछ नहीं कह सकते कि हाँ फंडामेंटली कंपनी इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस व्हिच आर स्टिल देयर, but we need to really see whether it's really an end to the dark days for Vodafone Idea. For that, we need an answer to the following five questions, which I understand. So, first one is anything genuinely good happening for the company? Then we will see in this video, can this company realistically turn into profitable and self-funding enterprise? क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो वेल्थ क्रिएशन के लिए होती है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी अपने ही प्रॉफिटेबल ग्रोथ को अचीव कर सके। देन लिगेसी इश्यूज, सो यहाँ पे क्या मैनेजमेंट ने उसको एड्रेस किया है या नहीं। देन आरपी ट्रैजेक्टरी, क्या उसकी एबिलिटी है कि वो अपने इंफ्रा को फंड कर सके। और एनी हिंट कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स कोई आने वाली है या नहीं आने वाली है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कुछ अच्छा हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें जो देखने को मिलती हैं, यस, सो सम इम्प्रूव ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स आर देयर, बट बैलेंस शीट इज इंप्रूवमेंट इज नॉट देयर। सो ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट सब गए, कंज्यूमर आरपू इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे कंज्यूमर आरपू जो है करंटली 177 तक पहुंच गया है, और सॉरी 180 तक पहुंच गया है एज फार एज द Q2 FY16 इज कंसर्न। सो ये हाइक बेसिकली टैरिफ्स जो हमने पीछे देखे थे अक्रॉस द स्पेक्ट्रम थे, एयरटेल जियो ने सबने बढ़ाए थे। सो उसकी वजह से आया। यहाँ पे कोई भी सब्सक्राइबर ग्रोथ नहीं आई। सो देर इज ओनली एन 88% इंप्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस। ना क्वार्टरली सब्सक्राइबर लॉस, हाँ यहाँ पे चर्न जो है वो कम हो गया है। जो अराउंड 5.2 मिलियन हुआ करता था, नाउ इट इज रिड्यूस टू ओनली 0.5 मिलियन। सो एक्सपेक्टेशन है, कंपनी भी कह रही है कि इट माइट स्टेबलाइज और इवन माइट स्टॉप और टर्न अराउंड फेस होने को पॉसिबिलिटी है। 4G और 5G सब्सक्राइबर्स की बात करें, दे आर एक्चुअली एडिंग, दैट्स अ गुड which is happening for them. So they are adding around 0.4 to 1 million in recent quarter, और उनके 4G 5G सब्सक्राइबर काउंट जो है वो 128 मिलियन के करीब है। नाउ नेटवर्क क्वालिटी की बात करें, केपीआईज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। 4G का कवरेज उनका 84% तक पहुंच चुका है। नाउ सुनने में लगेगा ये थोड़ा सा ऑड है, बट फैक्ट इज यस, while Jio is fully 5G, Vodafone is still trying to cope up with the 4G. Or we all know that even BSNL is doing it. So it's not like everything, every operator जो इंडिया में काम कर रहा है, all are in 5G capability. There are still a lot of things are happening on the 4G front itself. 4G data capacity was up 31 to 38%, and 4G speeds they have improved over the period of time. Now they have 19,000 broadband locations and 90,000 broadband sites added in the last year, and total broadband sites जो हैं currently इनके पास 527 के पहुंच गई हैं।
केपेक्स एक्चुअली हो रहा है, दिस इज अ गुड थिंग विच इज हैपनिंग, क्योंकि ये एक सेक्टर ही है जो काफी हैवी है। तो आपको केपेक्स कंटिन्यूसली करना ही पड़ता है ताकि आप टेक्नोलॉजी को कोप अप कर सकें। और इसके लिए सभी कंपनियां केपेक्स करती हैं। तो ये सेक्टर में हम देखें तो एयरटेल जियो सब अच्छा खासा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, इवन टू द ट्यून ऑफ 20,000 अबव करोड़। बट वोडाफोन, एज दे डोंट हैव सच मच फंड्स, बट in even 25 they went into a capex of around 9600 crore. So 9620 crore हाईएस्ट केपेक्स रहा है इनका मर्जर पे। और H1 की बात करें, दे हैव इन्वेस्टेड अराउंड 4200 करोड़ फॉर दिस। और गाइडेंस है कि रेस्ट ऑफ द हाफ में ये 7500 करोड़ फुल हो जाएगा। तो दे आर ट्राइंग टू कैच अप वट एवर दे कैन फ्रॉम द इंटरनल अक्रूवल्स एंड एग्जिस्टिंग कैश फ्लोज। प्लान बहुत ही रोजी है। They want to do 52,000 capex over the next 3 years. So that will translate around, as I said, around the Airtel numbers. So 15,000 plus to diversify or densification of their 4G networks and 5G networks. But seeing the current run rate, जो हमने ऊपर देखा 7,500 का, I doesn't seems to be realizing this plan is very much dependent on the external fundings, which is currently not there for the firm. एंटरप्राइज बिजनेस में थोड़ा सा ग्रोथ है। 10-year contracts for 5 million smart meters they have achieved, biggest smart metering win in India, aiming for 12 million smart meters in 3 years. Then IoT innovation lab with AWS, then SaaS launches, cloud security offering ready for next SME platform. So they are creating something around this. VI app monetization, they are doing it via VI Finance, VI Movies, and OTT apps, gaming utilities, and ONDC integration. So, although not sure how much revenue contribution will actually come from these enterprise or IoT or digital solutions, still they we can see the business is becoming less broken operationally. Balance sheet wise, it might not be there, but operationally it can be. Now, second question is very important. Can this firm really turn into a profitable enterprise? Can they do it on their own? So let's find out what the numbers are saying or what are the facts. So quarter two data ये कहता है कि revenue is around 110 billion. Uh, Surely there is a quarter on quarter 1.6% improvement. EBITDA जो है वो 46 billion के करीब है. Margin is currently around 41, 42. एंड कैश EBITDA की बात करें तो दे आर जनरेटिंग अराउंड 23 बिलियन टू 24 बिलियन इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स एट 20 to 21% मार्जिन के करीब। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, they have a depreciation and amortization cost which is around 39 billion per quarter, which is certainly above their cash EBITDA, and finance cost is around 36 billion. So that's why you can understand on a net PAT basis they are actually loss making firm still. So cash EBITDA is nowhere enough to even cover for their finance cost. Improved EBITDA will come with tariff hikes, but they don't have a control as it's an industry pricing. सो यहाँ पे बेसिकली ये जियो और एयरटेल को फॉलो करते हैं। दे कैन नॉट कमांड, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी कस्टमर छोड़ के जा रहा है, ये सब्सक्राइबर गेन ही नहीं कर रहे, तो देर इज नो रीजन दे विल बी एबल टू लीड इट। सो वट एवर जियो और एयरटेल विल लीड, they will just follow the suit and they will be able to make money only if the Geo or Airtel decides to raise the prices. Now, 55 to 50k crore 3-year capex plan needs banks or NBFC or other fundings. They explicitly say long-term bank funding is still being tied up. Banks may wait for the clarity on government relief on post Supreme Court order on AGR. Without that funding, they themselves admit capex beyond the FPO will mostly be limited to what cash EBITDA is available. क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा जो एजीआर का ड्यूज था उसको टर्न अराउंड करते हुए कंपनी में एक्चुअली स्टेक खरीद लिया है। तो इंटरेस्टिंगली नाउ इट्स ऑलमोस्ट अ गवर्नमेंट एंटरप्राइज बिकॉज 49% स्टेक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और वो भी एजीआर ड्यूज अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो वहां पे भी कुछ कोर्ट में डिस्कशन चल रही हैं। तो बैंक्स आर स्टिल वेटिंग ऑन कि हाउ विल इट हैपन, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। एजीआर रिलीफ की बात करें, टोटल एजीआर ऑब्लिगेशन जो है उनकी 78,000 टू 79,000 करोड़ है, जो अपनी स्टेटमेंट्स में वो मेंशन करते हैं। नाउ गवर्नमेंट हैज डेफर्ड द एजीआर प्लस स्पेक्ट्रम रिक्वायरमेंट्स ऑफ 1.94 लाख करोड़ एंड दे हैव मेड इट टू टिल 44। सो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी कि गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग द फर्म,
They want the Vodafone idea to survive. That's why government of India is making every effort जो उनके हाथ में है, ताकि उस पीरियड को वो डिले कर सकें और कंपनी सर्वाइव करके धीरे धीरे पैसा पे कर सके. बट स्टिल इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट विच दे नीड्स टू पे. सो वी कैन सी दैट जहां पे वो अपना फाइनेंस कॉस्ट ही नहीं पे कर पा रहे हैं अपने कैश बिड्डा से, तो एजीआर ड्यूज तो उसकी बहुत ही दूर की बात है. So management is always never ending discussion with dot is going on. So it does not seem that they will profitable soon in a fundamental sense. तो current numbers जो हैं इसको justify नहीं करते हैं. So they are still dependent on external relief and fresh funding. Next, there are legacy issues. Let's see management have addressed them or not. AGR overhang जो सबसे important चीज है. Government converted the spectrum auction dues of 36,954 crore into equity in April 25. Government stake 49% हो गया है. Promoters are now less than that, only 25.6%. टोटल ऑब्लिगेशन 78-79,000 करोड़ की है और उसके अलावा 1.9 लाख करोड़ जो स्पेक्ट्रम एजीआर सब डाल के देर आर स्टिल पेबल, but government has given actually an extended period of very long by 44. So there is nothing concrete there in future hangs on external leaves. As हम ऊपर देख रहे थे, they are 4G coverage 84% है. So we can understand they are still not 5G, so they are lagging behind the peers like Jio and Airtel. तो 4G कवरेज इनका 84% तक पहुंचा है. टारगेट था 94% का. आई गेस दे आर स्टिल शॉर्ट ऑफ दैट. और 5G की बात करें, दे आर ऑफरिंग ओनली 5G इन 29 cities across the 17 circles. मैनेजमेंट का कहना है दे आर फोकसिंग द कैपेक्स ऑन 17 प्रायोरिटी सर्कल्स और डेंसिफिकेशन, और वो पैन इंडिया ये नहीं करना चाहते. बट रियलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज दैट द आंसर इज by framing late 5G rollout as deliberate capital discipline, but reality is funding constrained. They are playing a catch up right now. तो यहाँ के पास है ही नहीं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, तो करेंगे कहाँ से? So there is no possibility of going for pan India. So that's why they have to constrain themselves in some cities only. सब्सक्राइबर काउंट जो लिगेसी प्रॉब्लम है वहां पे इंक्रीज नहीं कर रहा है. सो मैनेजमेंट इज ऑलवेज सेइंग दैट दे एड्रेस इट, बट in a typical classic way. We are improving the trends, but don't ask for a date. So this is the view which the management is presenting on their conference calls, and so the rosy nahi hai. Now fourth question is ARPU. ARPU बढ़ रहा है, यस. और क्या ये इतना ARPU बढ़ रहा है कि वो अपना सारा का इंफ्रा पे कर सकें और अपना रीपे कर सकें डेट, और दे विल बी एबल टू कंप्लीट क्लीन अप देयर बैलेंस शीट. So ARPU has grown 16 consecutive quarters, yes, driven by tariff hikes जो हमने पहले कहा, और upgrades, reaching 180 by quarter 2 26. But don't forget they are controlled. They don't have any control on this. They are just following the Jio and Airtel on this. Cash EBITDA margin has improved to 21%. Interest is 36 billion per quarter and D&A is 40 billion per quarter. So still swamped cash EBITDA. It actually could take everything away from that. So planned capex of 7,500 in FY26 is manageable from cash plus existing balance sheet that is only available. While the larger 50 to 55,000 3-year capex plan cannot be funded from internal accruals at all. So in other words, ARPU is rising but not yet to a level where they can do both. So fully fund their desired 4G 5G capital expansion and also comfortably service and reduce their massive debt and government dues. That is certainly not into the picture. Now, जब हम ऊपर और समझ ही चुके हैं कि यहाँ पे कंपनी को एक एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत है, तो माय अंडरस्टैंडिंग इज कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल वाइट नाइट और एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर चाहिए, तभी कंपनी एक वाइबल इन्वेस्टेबल स्टॉक बन सकती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए. क्योंकि ऊपर हम देख चुके हैं ऑपरेशंस में कुछ इंप्रूवमेंट है पर बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट नहीं है. सो करंटली सिनेरियो इज दैट FY25 में इक्विटी रेज 61,400 का उन्होंने किया, जिसमें फॉल ऑन पब्लिक ऑफर था 18,000 करोड़ का. दे हैव रेज्ड प्रेफरेंशियल इश्यूज 4,000 करोड़ टू प्रमोटर्स, जिसमें से आदित्य बिरला ग्रुप ने 2100 करोड़ को सब्सक्राइब किया. 1,900 crore from the came from the Vodafone group. That's a preferential ones. So 2,500 crore
came from the vendors, Nokia and Ericsson. That's an amazing thing to see. They are raising funds from those who actually they need to pay for the equipment. तो जितना भी 4G 5G इक्विपमेंट उनका लग रहा है वो नोकिया और एरिक्सन से आ रहा है. तो इंटरेस्टिंग थिंग इज vendors are actually investing in the firm. I guess they are already hoping कि rather than failing the firm and putting it taking it to the that bankruptcy code, it's better to lend them something and give them some breather. So that's what is happening right now. Government conversion of 36,950 crore dues to equity. तो ये भी उसमें एक पार्ट है, but we can understand that there is no cash which is coming to the government. So this is just a transaction from where the balance sheet has been debt conversion has gone into an equity conversion. That's it. So additional 19 point billion preferential issue to Vodafone entities in 24 quarter 4 हुआ. Now debt from the banks has reduced to 19 billion, but it's still a very big number. Ratings are only BB minus, stable outlook. So what's not concrete, what's not good? On calls, when asked about the funding, they say they are engaged with the banks and NBFCs and multiple partners for the credit, but no names, no binding term sheets, no announced large strategic institutional investor beyond the existing promoters and government. So this is what happening. So सब कुछ कहा जा रहा है बट एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी पे कन्वर्जन्स जो हैं वो नहीं हो रहे हैं. सो दे आर नॉट एबल टू गेट एक्चुअली द बॉल रोलिंग. So my understanding is, as I've analyzed over the all the questions, without a white knight coming to their rescue, I don't believe they will be out of this situation. Something similar to Air India needs to happen, जो हमने ऑलरेडी देख लिया, क्योंकि एयर इंडिया के पास इतना डेट हो गया था कि दे कुड नॉट एबल टू सर्वाइव इट. गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किए, समथिंग एल्स डिड दिस डिड दैट, बट नथिंग हैपेंड. गवर्नमेंट ने फंडिंग भी करी तब भी कुछ नहीं हुआ. तो यहाँ पे भी सिचुएशन कुछ ऐसे ही होती जा रही है. तो ये बलून इतना बड़ा हो चुका है डेट का कि ये कंपनी अपने इंटरनल एक्रूल्स और अपने इनकम से कवर ही नहीं कर पाएगी. सो आई हैव गिवन दिस एग्जांपल, दैट्स व्हाई. तो समथिंग सिमिलर टू एयर इंडिया नीड्स टू हैपन फॉर दिस कंपनी फॉर द सर्वाइवल. यहाँ पे ह्यूज डेट राइट ऑफ्स करने पड़ेंगे. विल नीड टू स्टार्ट विद द क्लीन स्लेट और न्यू स्ट्रैटेजिक, बेसिकली सम फॉरेन टेलीकॉम इन्वेस्टर अगर आए, दैट विल बी गुड बिकॉज it will foster competition as well. And even I would say, as we know that Adani is pouring into every field or wherever the government is offering opportunities. So there might be an opportunity that you might see Adani Telecom in the future rather than a Vodafone Idea. So this is how what I read from the most of the documents which are provided as far as the transcript calls are there. So this is my view. You can always read it from our Twitter handle as well. So in case there is any questions, you can surely post it on the Twitter feed, and sorry, you can post on Twitter feed as well as on this. I'll answer that. और अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं कि मैं किसी और स्टॉक का एनालिसिस करूं और इसका वीडियो पोस्ट करूं, आई विल वेलकम दैट एज वेल. सो विद दैट I'll end my stream. Before ending the stream, I'll just like to read out the disclaimer. So because I'm a research analyst, SEBI research analyst, and we need to give a disclaimer, which is conflict of interest. There is no conflict of interest. I don't have any holdings in this company, so neither we have received any payments from making any claims or analysis for this. And investment in securities market are subject to market risk, so read all the documents carefully before investing. आपको अपना research खुद करना चाहिए. Registration granted by SEBI and certification from INSM no way guarantee the performance of the research analyst or provide any assurance to returns. And then AI disclosure. I have taken an AI support to create the do my research. Disclosure. SEBI research analyst. I am offering only stock advising services since August 24. You can check our website and homepage for more details on service plans and our newsletter subscription. I also offer model portfolio and algo trading services. You can drop me an email at vishaltrihan underscore ra underscore inh 000016 to connect further. You can also drop me a WhatsApp at 9711490798. Please note, I do not provide any execution or distribution services. I am not affiliated to any broker, mutual fund house, or any other financial intermediary to promote or endorse their products and services. Furthermore, I am not registered as an investment advisor, so do not provide any customized investment services.
I only provide research and recommendation services within the framework of SEBI RA regulations. Then you can check it out on our website for more details on disclosures and this. So with that, मैं आज का डिस्कशन खत्म करता हूँ. सो हम फिर मिलेंगे एक और नए स्टॉक और एक नए एनालिसिस के साथ. For till then, thank you. You can subscribe to our channel and also start the bell notification ताकि आपको पता लगता रहे जैसे ही कोई नई वीडियो आए. Thanks for listening me.